Hello everyone. So today we are going to see the CSIR UGC National Eligibility Test, which is NET, for Junior Research Fellowship and Lectureship. तो Life Science CSIR UGC NET का जो syllabus है, we are going to see. So basically CSIR में 13 units हैं. जो हमारा पहला units है वो है Molecular and their interaction relevant to biology. The second is Cellular Organization. The third one is Fundamental Process. Fourth is Cell Communication and Cell Signaling. The fifth one is development biology. Sixth is system physiology for plant, and seventh is system physiology of animals. Eighth one is inheritance biology. Ninth is diversity of life forms. 10th is ecological principle. 11th is evolution and behavior. 12th is applied biology, and 13th is methods in biology. तो ये बेसिकली 13 हमारे यूनिट्स हैं जो कि लाइफ साइंस में हम देखते हैं. अब हम इसमें देखेंगे कि वो जो एक एक यूनिट है उसमें क्या क्या जो है वो जो पहली यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी वी कैन सी द फर्स्ट यूनिट. In the first unit, we have total J chapters. The first is structure of atoms, molecules, and chemical bonds. Chemical bonds. उसके बाद composition है structure and function of biomolecule जिसके अंदर carbohydrate, lipids, protein, nucleic acid, vitamins हैं. जितने भी interactions हैं उनके बारे में दिया है. फिर biophysical chemistry से pH, buffer, kinetics, thermodynamics ये सारी चीजें हो गई. फिर bioenergetic glycolysis, oxidative phosphorylation ये सब हो गया. Principal enzymes के बारे में हो गया. Enzyme kinetics हो गया. Enzyme regulation हो गया. Protein, most important Ramachandran plot, secondary structure, domains, motif, and folds. Then we have conformation of nucleic acid like A, B, J, three types of nucleic acid, tRNA, microRNA, stability of protein and nucleic acid, and then metabolism of carbohydrates, lipids, amino acid, nucleotides and vitamins. So ये है पूरे फर्स्ट यूनिट में. सेकेंड चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसमें जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में है. देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर रीजन जहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हो गए जैसे कि सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोजाइम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोर्टेलिटी. साइटोस्केलेटन हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, मतलब इसका रोल क्या क्या है वो सब हो गया. द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स. जो भी ऑपरेंट मॉडल है इंपॉर्टेंट वन, रिपीटेटिव डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, ट्रांसपोसोम्स हो गए, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ये सारी चीजें हो गई. देन वी हैव सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल विच इंक्लूड्स माइटोसिस, meiosis, their regulation, their control of cell cycle. And the next is microbial physiology which includes growth, yield and characteristic strategies of cell division and stress response. The next is fundamental process, which includes the DNA replication, repair and recombination, DNA synthesis and processing. उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग जिसमें टीआरएनए ये सब का जो भी कैसे प्रोसेस होता है वो किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ये सारी चीज़ें हो गई. देन वी हैव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल. तो ये सारी हो गया. द फोर्थ यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग जिसमें पहला है होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन जैसे देख सकते हैं. Recognition and entry process of different pathogens like bacteria, viruses into animals and plant host cells. Alternation in host cell behavior by pathogens. Virus-induced cell transformation. Pathogen-induced disease in animals and plants. Cell fusion in both normal and abnormal cell. देन वी हैव सेल सिग्नलिंग जिसमें जी प्रोटीन का रिसेप्टर हो गया आपका, डिफरेंट जो भी पाथवेज हैं वो सारी चीज़ें हैं. देन वी हैव सेलुलर कम्युनिकेशन. देन कैंसर जिसमें कैंसर के बारे में सब कुछ है, मेटास्टेसिस, ट्यूमर सप्रेशर जीन, ऑन्कोजीन. फिर इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जितना भी पूरा इम्यून सिस्टम है जिसके अंदर HIV हो गया आपका, यू कैन सी दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन हो गया, पी सेल, टी सेल्स, ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, टॉल लाइक रिसेप्टर, ऑटो इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब कुछ जो है वो दिया हुआ है. द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बायोलॉजी विच इंक्लूड्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड देन गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, morphogenesis and organogenesis in animals, and morphogenesis and organogenesis in plants. Then we have programmed cell death, aging and sensation. In system physiology, in case of plant, it includes photosynthesis, respiration and photorespiration, nitrogen fixation, plant hormone, sensory photobiology, solute transporter and photo assimilation, translocation, secondary metabolites, stress physiology. In case of animal, it includes blood and circulation, cardiovascular system, respiratory system, nervous system, sense organ, excretory system, thermoregulation, stress and adaptation, digestive system, endocrine and reproduction.
In case of inheritance biology, which includes Mendelian principle, concept of gene, extension of Mendelian principle, gene mapping method, extra chromosomal inheritance, microbial genetics, human genetics, quantitative genetics, mutation, structure and numerical alternation of chromosomes, and recombination. The next one is diversity of life form, which includes principle and method of taxonomy, level of structure organization. You can see that whatever the levels are unicellular, colonies, multicellular forms, and all these things. Then we have outline classification of plant, animals, and microorganisms, evolutionary outline classification of plant, animals, and microorganism, which includes all the taxons, classification of plants, animals, and microorganism, evolutionary relationship among taxa. Okay. The next is natural history of Indian subcontinent. Okay. Then organism of health and agriculture importance, organism of conservation and concern, like rare, endangered species, conservation strategies, all these things. The next is ecological principle, which include the environment, habitat niche, population ecology, species interaction, community ecology, ecological succession, ecological ecosystem ecology, biogeography, applied ecology, and conservation of biology. So it is one of the most important unit. The next is evolution and behavior, which is also very important, which includes emergence of evolutionary method, origin of cell and unicellular evolution, and paleontology and evolutionary history, molecular evolution, the mechanism, brain behavior, and evolution. Okay. The next is applied biology, which includes microbial fermentation and production of small and macromolecules, application of phenological principle, vaccine, diagnosis, tissue and cell culture method for plant and animals, transgenic animals and plants, molecular approaches to diagnosis and strain identification, genomic and its application to health and agriculture include gene therapy, bioresource and use of biodiversity, breeding in plant and animal includes market assisted selection, bioremediation and phytoremediation, that biosensing. The last unit, which is methods in biology, which includes molecular biology and recombinant DNA method, which includes isolation and purification of RNA, DNA, protein, different separation method. Then analysis of RNA, DNA, and protein by one and two dimensional gel electrophorese, electric focusing gel. Basically, इसके अंदर जितने भी हमारे techniques हैं वो सारे हैं, like cDNA, you can see back, yak, protein sequencing method, DNA sequencing, RFLD, RAPD, AFLP, etc. Then histochemical and immunotechnique, which includes antibody interaction, detection of molecule using ELISA, RIA, Western blot, immunoprecipitation, glucose cytometry, immunofluorescence microscope, detection of molecules in living cells, in situ localization by techniques such as FIS and GIS. And then we have biophysical method, which includes UV visible spectroscopy, fluorescence, circular diagram, NMR, ESR, and then X-ray diffraction, NMR, molecular analysis using light scattering, different type of mass spectrometry, and surface plasma resonance method. The last is statistical method, which includes obviously all the central tendency, mean, medium, mode, and all the type of regression, correlation, different type of tests, which include t-test, f-test, chi-square, basic introduction, and sampling distribution, everything, like all the statics are there. So this is all about the 13 units, which is uh, ये जो पूरा यूनिट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द CSI UGC नेट सिलेबस, बिकॉज यही तो सिलेबस है. इनमें से कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, we have cellular organization, and these are easy also. We have cell communication and cell signaling, um, inheritance biology. This some of them are very important. So that's it. That's all about CSI UGC NET, and thank you.